नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत फिलिपिन्स भागीदारी फकत दोनूय देशांतल्या लोकांक फायद्याची न्हय तर ह्या वाठारांत शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर म्हत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. भारत फिलिपिन्स द्विपक्षीय संबंधांविशीं तांणी सांगलें. फिलीपींस के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान से बने लोगों के बीच संबंध हमारी मित्रता और सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं. वीजा व्यवस्था में और अधिक सुगमता और बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ मुझे विश्वास है हमारे लोग और व्यवसाय भी करीब लाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर बांदिल्ल्या कर्तव्य भवनाचें उक्तावण केलें. कर्तव्य भवन हे दर एका व्यक्तीची सेवा करपा खातीर सरकारच्या वचनबद्धतायेचे आनी सतत यत्नांचे प्रतीक आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं तांणी म्हळां. मजगतीं प्रधानमंत्री ह्या निमतान सांजे 6:30 वरांचेर जावपी कार्यावळींत उलोवप करतले. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीत ICAR पुसात MS स्वामीनाथन शती आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतले. ह्या वेळार ते सभेक संबोधीत करतले आनी अन्न आनी शांतताये खातीर पयलो MS स्वामीनाथन पुरस्कार भेटयतले. विरोधकांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज पयलीं दनपारां 2 मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. केंद्रीय जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दर्या येरादारी विधेयक 2025 लोकसभेत मांडलें. ताचे पयलीं सकाळीं 11 वरांचेर लोकसभेची कारवाय सुरू जाली तेन्ना सभापती ओम बिर्ला हांणी हिरोशिमा दिसा निमतान जपानांत जाल्ल्या अणु हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपतना सांगलें. घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था. ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है. राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26 वर्सा खातीर मणिपूर राज्याचो अदमास खर्च आनी उत्पन्नाचें निवेदन सादर केलें. तशेंच आदले वांगडी आनी राज्यपाल सर्गेस्त सत्यपाल मलीक हांकां आर्गां ओंपलीं. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल फाल्यां मॉस्कोत रशियन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन भारत रशिया संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याचेर चर्चा करतले. तशेंच संरक्षण उद्देगाच्या सहकार्याचेरूय उलोवणी जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलन धोरण समितीन आयज रेपो दर 5.5% दवरपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून स्थायी ठेव सुविधा दर 5.25% आनी किमान स्थायी सुविधा दर आनी बँक दर 5.75% उरतलो. भारतीय आयातीचेर अमेरिकेन शुल्क घाले तरी लेगीत ह्या वित्तीय वर्सा खातीर GDP वाड 6.5% जाल्यार चलन वाड 3.1% उरतली असो अदमास रिझर्व्ह बँकेन उक्तायला. आसामचे मुखेलमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा हांणी आयज गुवाहाटीत मुख्यमंत्री निजूत मोयना 2.0 येवजण चालीक लायली. शाळा सोडपाचें प्रमाण उणें करपाक आनी उच्च शिक्षणाक चालना दिवपाक अर्थीक मजत दिवन चलयांक सशक्त करपाचो हो येवजणेचो हेत आसा. सगळ्या कुटुंबांतल्या चलयो हे येवजणे खातीर पात्र आसात. हे अर्थीक वर्सा 4 लाखां परस चड चलयांक हे येवजणेचो लाव जातलो. उत्तराखंडातल्या धराली वाठारांत काल जाल्ल्या ढगफुटी उपरांत मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावण्यार चालू आसा. भारतीय सैन्य, NDRF, SDRF, जिल्लो प्रशासन सक्रीयपणान वावुरतात. आतां मेरेन 130 परस चड लोकांक सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत केल्यात. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी वांगडा उलोवन मजत आनी बचाव कार्यावळी विशीं नियाळ घेतलो. हे वेळार मुख्यमंत्री धामी हांणी सांगलें. काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं. के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है. आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है. सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं. जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा. भारतीय हवामान खात्यान गोंयांत आयज आनी फाल्यां चड पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. बुद्धीबळात चेन्नईच्या हयात रिजेसी लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेक लागून आयज सुरू जावपा आशिल्ली चेन्नई ग्रँड मास्टर सर्तीची तिसरी आवृत्ती फुडें धुकल्ला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय